Hi users, good evening. So today we are going to discuss release strategy and also see how can we configure the release strategy by using SPRO. Okay. So before starting the release strategy, we need to understand the logic behind the release strategy part. Okay. So why we require the release strategy? So basically, this post about the release strategy where we have highlighted pure release strategy configurations and prerequisites. So we need to define a parameter to initiate the release strategy. Here I have opted the document type. Okay, so you have to create a release strategy by using the document type or the material group or the purchase requisitions. Okay, and the purchase value. So these are the example based on we have to create a release strategy and create a characteristic part. Okay, so most important the structure CEKKO for the purchase order. If you are going to create a release strategy or configure the release strategy, so you need to follow these structure CEKKO communication release strategy determine purchase document display. Okay, so the characteristic class and configure. So we will discuss about the three step. First one is characteristic, second one is a class, third one is a configuration where we have to create a release group, release code, release strategy. Okay, so first of all the characteristic. So characteristic need to be created for the attribute on which release strategy is dependent. Okay, so basically characteristic depend on the like which type of release strategy you need to configure. So characteristic basically the part basically the attribute. Okay, so for example we are going to create a release strategy based on the document type. Okay, so like document type NB for the standard document, and you like you for the stock transfer and service purchase order, and some others like import purchase order. So these are the document type. So for example we have a CEKKO and BSART. This is basically the field document type where we store the document type data in a table CAK, MAC, TKL material group. Okay, so this is the T code for the CT04. You can create a characteristic by using the T code as well. You have to create by using the SPRO. So all these things we will discuss by using the SPRO. So for now just I will give some introductions, some information about the release strategy part. So first we have to define the release first we need first step we have to define characteristic part for the document type. Suppose we have to go suppose we are going to create a characteristic for two types like the document type, and the second one is net value or the purchasing like the material group. Okay, so based on the attribute we are going to create first one document type, second one using the net value. Okay, so for example here I'm just showing you. So we need to create a first step we need to create a characteristic. Here define a number of characters and value. So enter a characteristic name, the click and button, select data type. Okay, then create a second for the material, and first one is for the first one for creating the material and second one is document. Okay, so two characteristic created, and then after using a CL02 for the for creating a class. Okay, so class we have to define a 032 is a release strategy class type. Okay, so here we have to create and assign class type in a restrictions part. Then second step is class. So class need to create it to club all characteristic. Okay, so inside the class we are going to club all the characteristic. Okay, so which was created in last. So the characteristic as created above the pure release strategy. तो यहाँ पे बेसिकली हम सारे जो भी हमारे characteristic हमने create किए हैं उनको सबको यहाँ पे हम लोग merge करेंगे so that we can access easily in the class part. So run transaction CL02 already I have told you, and the class type 032. So here you can see the characteristic. Here we can assign the class type, configuration, release strategy, and release group. So third part is configuration. Inside the configuration we will going to create a release group, release codes, and release indicator, release strategy. So release group like the group of person, and the release code what code we need to assign. Release indicator like B for B block, and release R for release strategy. Here we have to define a characteristic class and stimulate the data and workflow. So workflow is assigned the user side who is responsible for the releasing the part. Okay, so this is the scenario. Now we will directly move on to practically so that we can understand the logic behind the release strategy. Okay, so now all the things we are going to discuss by using the SPRO. So all the setup
we are using the SPRO inside we can all done the setups. Okay, so SPRO, going SAP IMG, click on the material management. So yeah, here is material management, then click on purchasing. After purchasing, click on the purchase order, because we are going to create a release strategy for purchase order. If you are if you want to create a releasing strategy for purchase requisition, so you can also go with the purchase requisitions. Okay, but now we are going to discuss for the purchase order release strategy. So click on the purchase order, then click on the releasing part, release procedure for purchase order. Fine. So here you can see the CT04 for the characteristic, CL02 for the class, and the third one is releasing procedure. Okay? So before moving to discuss the release strategy, फर्स्ट हम लोग एक बार पीओ बना के देख लेते हैं, सो दैट देखते भी हमारा रिलीजिंग स्ट्रैटेजी वहाँ पे कुछ है या नहीं. ओके, सो ME21N फॉर नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ डेमो पीओ. डॉक्यूमेंट टाइप NBA, एंड नाउ क्लिक द वेंडर पार्ट, select organization, select group, company code. Okay, now select the material, plant. So now here enter the 100 price, 100 quantity. Okay, just click on save. So this is your purchase order 397. Just click on display. So ME22N 397. Okay, so 45397, just 397. Okay, 397. Okay, so you can see here there is no release strategy are showing. Okay, यहाँ पे भी कोई भी release strategy नहीं, because अभी हमारे पास कोई भी release strategy नहीं against the document type and the value. Okay, so now अभी हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. सो वन बाय वन करके क्रिएट करते हैं क्विकली, सो दैट इजली यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक पार्ट एंड द स्टेप्स आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट. सो पहले हम दो क्रिएट करेंगे, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक डॉक्यूमेंट के लिए, सेकेंड करेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए. ओके, so for now only we are going to create just two characteristic. Okay, not much more than like purchase organization, material type. So these are not right time to discuss about these part. You can create by on if you are going to understand all these things. Okay, so अभी के लिए मैंने documents के लिए characteristic डाला doc, and just click on the create document type. Okay, description, and just enter. So document type single value. Okay, characteristic format. So for document, just I need to create numeric of character only 2. You can also put the 4, because some of the document have 4 digits. Okay, but now we are using NB, so that's why I'm just using 2. Okay, document type and the value. So value आपका वही होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट में है. ओके, अगर सेम नहीं है, so it means you can face some errors, because आपका रिलीज स्ट्रेटजी हिट नहीं करेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यू नीड टू बी श्योर लाइक कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारा एग्जैक्ट होना चाहिए. ओके, सो हियर वी हैव टू यूज़ NB. जस्ट क्लिक ऑन एडिशनल डेटा. सो यहाँ पे हम CEKK यूज़ करेंगे. ओके, जो अभी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे. सो दिस इज़ द टेबल नेम CEKK. यू कैन सी हियर like SE11, this is a T code. You can see /n SE12. so ये मैंने टेबल यूज़ किया. okay, click on display. so you can see here there is a lots of field. okay, so these are the field we need to assign inside the characteristic. okay, suppose if you are if you want to create a like release strategy by using the order type or the company code or the supplier, so you can use these fields component. Okay, so now we are using the BSRT for the document type. Okay, so the same thing here I am using CKKO BSRT field. Okay, just click on enter and check NB. okay, so again here select NB and stand up here. fine. so ये आपका document type same होना चाहिए. just click and click on save. so now I have created one characteristic. now we are going to create another characteristic. so just click on net value, PO value के लिए PO value, just click here. document type currency is because we are using the currency. so currency just 15 number characteristic ले लेते हैं. INR, click on the part
and here just select the multiple value and the intervals value allowed, so that you can use the intervals value as well. And now again select CKO table, and for the net value this is the field name. Okay, so you can here check the GET and B. Okay, so you can see here this is the total net order value. Okay, so here just click on enter, and here assign value. So right now if suppose our PO order value greater than 100, okay, सो अगर मेरा 100 से अबव है तो मेरा ये रिलीज स्टडी हिट करेगा. अगर 100 से नीचे है पीओ का क्वांटिटी, पीओ की वैल्यू, सो ऑन दैट टाइम ये हमारा हिट नहीं करेगा. ओके, so to be sure that this is the configuration characteristic value. Okay, so if the PO value is greater than 100, so that time the PO release strategy hit. Okay, so just save on back. Again second step, click on the characteristic. Now here I am going to assign class. So PO stand, just click on the PO stand, create descriptions, standard PO. Okay, so now going to create a standard PO एंड जस्ट क्लिक. यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जितने भी हमने करेक्टरिस्टिक क्रिएट किए हमको यहाँ पे मर्ज करना, साइन करना है. सो पीओ वैल के हमने क्रिएट किए थे. ओके, एंड सेकंड हमारा जो था पीओ वैल. सो जस्ट क्लिक ऑन एंटर. सो ये हमारे पास आ गया यूनिट वैल्यू जो हमने असाइन किया वहाँ पे. फाइन, जस्ट क्लिक ऑन सेव बैक, एंड अगेन जो थर्ड स्टेप रिलीज ग्रुप. सो सेकेंड में हमें जाना डिफाइन रिलीज ग्रुप. सो फर्स्ट स्टेप रिलीज ग्रुप. रिलीज ग्रुप हमें क्रिएट कर लेते हैं. सो रिलीज ग्रुप में यहाँ पे एक सेपरेट रख लेता हूँ ST, या फिर मैं इसको अगर ओके मैं इसको ST रख लेता हूँ फॉर नाउ. ठीक है, क्लास हमारे पास क्या था, PO स्टैंड के थे. बस क्लिक है डिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड PO था हमारा. ओके, क्लिक हेयर. यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट खुद के क्रिएट कर लेता हूँ मैं. सो रिलीज PO. ओके, यहाँ पे हम अपने इस प्रॉम्प्ट में इसको सेव कर लेते हैं. सो दिस इज़ द TR रिक्वेस्ट. ओके, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हेयर वी हैव टू पैकेजेस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया ST के नाम से. ओके, द सेकंड स्टेप रिलीज कोड. सो हेयर फर्स्ट ST, दिस इज आवर ग्रुप. रिलीज कोड 10 एंड अगेन ST रिलीज कोस्ट 20, बिकॉज यहाँ पे अभी हम दो लोगों को असाइन कर रहे हैं. ओके, so 2 person we are going to assign. So first manager, second deputy manager. Fine, 20 में. Just click on save. So this is our prompt. Back, and the third step release indicator. So now we are going to release indicator. For release indicators के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे A and sorry यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको B and for A release, these are the release indicator. Sorry A, ये मेरा रिलीज रहेगा. इट मीन्स रिलीज B फॉर ब्लॉक्ड. चेंजेबल वैल्यू में इसके 6 डाल देते हैं, बिकॉज 6 टाइम वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू एज वेल. सो दिस इज ब्लॉक डिस्क्रिप्शंस ऑल्सो मेंशन हियर. क्लिक. सो अभी हमने क्या किया, रिलीज इंडिकेटर हमने साइन कर लिया, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि B है, इट मीन्स द ब्लॉक अभी रिलीज नहीं है. रिलीज और अगर रिलीज है तो वो आ रहेगा. ओके, जस्ट क्लिक ऑन अगेन प्रॉम्प्ट बैक. अब हमारा फोर्थ स्टेप रिलीज को रिलीज स्ट्रेटजी, यहाँ पे हमको असाइन करना. सो जस्ट क्लिक ऑन द न्यू एंट्रीज. रिलीज ग्रुप हमारा ST था. ओके, एंड रिलीज स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ NB फॉर नाउ. रिलीज कोड हमने ले लिया 10 और 20 हमने असाइन किया. दिस क्लिक. सो यहाँ पे भी हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर. देन क्लिक ऑन द प्री रिक्वेस्ट. यहाँ पे मैं इसको 20 पे असाइन करेंगे प्री रिक्वेस्ट पे. ओके, सो रिलीज प्रोसीजर हमें 20 तक जाएगा तभी रिलीज होगा. देन क्लिक ऑन द रिलीज स्टेटस. सो रिलीज स्टेटस अगर हमारा कोई भी रिलीज़ नहीं है तो ब्लॉक्ड है, यानी रिलीज़ नहीं है. अगर फर्स्ट लेवल पे भी रिलीज़ है तो भी हमारा ब्लॉक्ड रहेगा, रिलीज़ नहीं होगा. जब दोनों लेवल पे हमारा रिलीज होगा. ओके, सो बोथ लेवल both level has been released, so on that time the reflect is release conditions. Okay, just click on the conditions part. Just click on the configuration here, classification. So classification assign your value. So NB हमने क्रिएट किया था, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा रहेगा. एंड जो वैल्यू थे हमारी ग्रेटर देन 100 थे, तो मैंने इसको यहाँ पे असाइन कर लिया. फाइन, जस्ट क्लिक ऑन बैक. अगेन रिलीज सिमुलेशंस पार्ट. तो यहाँ पे हम एक बार सिमुलेट करके देखेंगे कि हमारा वो परफेक्ट रिलीज स्ट्रेटजी वर्क कर रही है नहीं. जस्ट क्लिक. जस्ट अ मिनट, समथिंग एल्स.
wait, just click on save and again check value, fine, ओके ना। सो अभी हमारा यहाँ पे एक सेकेंड, अभी हमारा ये रिलीज़ हो रहा है। ओके, सो मैं इसको फर्स्ट पे रिलीज़ करता हूँ, अफेक्टेड हो गया, अभी भी मेरा ब्लॉक्ड है राइट। मैं जब सेकंड पे इसको रिलीज़ करूँगा तो अभी मेरी स्टेटस चेंज हो गया, रिलीज, इट मीन्स विल वर्किंग फाइन। ओके, सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन। मैं इसको करता हूँ बैक। ओके, सो ये हमारा हो गया, यहाँ पे इसको किया बैक। इसका तो वर्क फ्लो, सो वर्क फ्लो में यहाँ पे हम असाइन करेंगे। सो यहाँ पे मेरा असाइन है। ओके, यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी डाली, यूएस आपको यहाँ पे करना होगा। ओके, यू कैन से ऑब्जेक्ट टाइप है हमारा यूएस, एंड एजेंट आईडी आपको जो भी पर्सन है उनकी आप एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे असाइन करोगे, सो दैट कि वो इजीली इसको रिलीज़ कर पाएंगे। सो फर्स्ट और सेकंड लेवल पे मेरा ये असाइन। ओके फाइन, सो ये मेरा हो गया। अभी हमने क्या किया कि फर्स्ट हमने क्रिएट किया रिलीज स्ट्रेटजी। ओके, सो फर्स्ट स्टेप we have to create a characteristic, then second step we have to create a class and merge inside assign all characteristic inside the class. Then the third step is defining release procedure, where we have to discuss the release code, release group, release indicator and release strategy and then workflow. Okay, so all three step has been done now, and now the testing part. तो अभी हम चलते हैं, इसको चेक करते हैं अगेन टेस्टिंग करके। ओके, सो अगेन ME21N, यहाँ पे हम व्यू अगेन क्रिएट करते हैं। ओके फाइन, मटेरियल ले लेता हूँ मैं एक एंड प्लांट। अब सपोज मेरा क्या है कि 100 से वैल्यू अगर अबव है तो मैं इसको 1110 वैल्यू डाल देता हूँ, इसका एक है। तो यानी अब इसकी वैल्यू मेरी मोर देन 100 हो गई है, तो मेरा रिलीज स्टडी यहाँ पे इसको इफेक्ट करना चाहिए। फाइन, कंडीशंस इनवॉइसेस में यहाँ पे कंडीशंस ले लेता हूँ, ऑलरेडी ये मेरा हो गया। ओके, एरर्स, नो एरर्स, कैन सेव, फाइन। तो 398। अब मैं इसको एक बार चेक करता हूँ मेरा रिलीजिंग स्ट्रेटजी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। स्लैश है 398 ME22N 398 फाइन। सो यू कैन सी हियर द रिलीज स्ट्रेटजी पार्ट नाउ विल शोइंग। ओके, सो ये हमारा शो कर रहा है, इट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर द रिलीज स्ट्रेटजी। ओके, सो ये मेरा रिलीज स्ट्रेटजी है, एनबी जो हमने बनाया था, ये मेरा रिलीज ग्रुप है एसटी, एंड ये मेरा ब्लॉक्ड इंडिकेटर। ओके, सो इट मीन्स अभी ब्लॉक्ड बिकॉज बोथ लेवल पे भी रिलीज नहीं है। फाइन, सो इट मीन्स वी हैव सक्सेसफुली डन अवर रिलीज स्ट्रेटजी पार्ट। नाउ इसको एक बार हम रिलीज करके देख लेते हैं। ओके, so the T code is ME29N, this is the T code for releasing PO. Click here, select, paste, no 398, yeah 398, click on the release side. Okay, so this is the first level because मैंने अभी यहाँ पे अपना ही ID साइन किया हुआ है दोनों लेवल पे, तो जस्ट क्लिक ऑन द रिलीज। अभी मेरा एक लेवल पे फर्स्ट लेवल पर रिलीज हुआ। ओके, देन वी आर गोइंग टू रिलीज फॉर द सेकंड लेवल। ओके, सो बोथ लेवल माई रिलीज स्ट्रेटजी रिलीज एंड इफेक्टेड सक्सेसफुली। फाइन, सो मैंने इसको यहाँ पे किया एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो नाउ आवर PO हैज़ बीन रिलीज्ड। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट क्लास गाइस। ओके, मैंने आपको कोशिश किया है कि बहुत ही लाइक शॉर्ट टाइम में मैं आपको ये समझा पाऊँ रिलीज स्ट्रेटजी क्या होती है। ओके, काफ़ी बड़ा पार्ट है रिलीज स्ट्रेटजी का, अगर आप पढ़ने जाओगे हम काफ़ी टाइप से इसको क्रिएट करते हैं। लाइक आप रिलीज स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन द मटेरियल टाइप, बेस्ड ऑन द मटेरियल ग्रुप, बेस्ड ऑन द अकाउंट असाइनमेंट, आइटम कैटेगरीज, वेंडर। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ कंडीशन यू कैन use it and create a release strategy. Okay, for now we have to discuss for the two levels. For the first one is the document level and the net value. Okay, so अगर मैंने यहाँ पे NB सेलेक्ट करूँगा तभी मेरा रिलीज स्ट्रेटजी हिट करेगा, और ये तब करेगा जब मेरा वैल्यू मोर देन 100 होगा। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट पार्ट। ओके, you can practice by on it. Okay, okay fine, so that कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, okay, so yeah, thanks guys for joining me. Thanks, bye, take care, good night.